Hello and welcome to RiffScript presents All Fingers and Thumbs. My name is Jainis Soni. I'm here with Vidur today. He's an artist, a philosopher, and a lot many things. I've had great opportunities to talk to him about various things related to art, to philosophy, and to life. Um, you can talk to him about brands as well. He has started his own clothing brand, which is named Pariverse. So today we have brought him here to talk about commercialization of art, about string art, about various things related to art, and of course, we are going to talk about his brand, Pariverse. So let's jump onto the conversation straight away, and let's welcome him. Thanks a lot. Thanks, Janish, for having me. Thanks for a great introduction as well. So, yeah, let's start it. Yeah. So I've always been fascinated since I've met you at Odyssey. You were taking workshops and you were teaching people string art, and I that's the first time when I saw what string art is and how you are making people do stuff with threads, colorful Right, threads. right. So I want to ask you what fascinated you into the field of arts, because if I know you correctly, I'm aware that you did engineering, textile engineering, Yeah, and like any other engineer, you did not pursue engineering, and you of course. went sideways and you pursued art. Right. So what fascinated you about art, and why particularly string art? Okay, so there's a long story to it. I started doing art since I was a child. I'll There are a lot of artists in my family. So, uh, you know, बड़े होते होते मैंने देखा कि वो लोग का लाइफस्टाइल बहुत अलग था. दे हैड अ प्रीटी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल. दे यूज्ड टू स्कल्प्ट. इन Hmm. माय फैमिली जो भी आर्टिस्ट थे, दे यूज्ड टू डू स्कल्प्टिंग. तो उनका लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि दे यूज्ड टू एन्जॉय देयर वर्क लाइक नो अदर पर्सन देयर. सारे लोगों के पास में काम सब लोग काम करते थे, बट वो लोग जिस तरह से अपना काम एन्जॉय करते थे, मुझे लगता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ, जिसमें मैं कभी बोर ना हूँ, या मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिसमें मैं अ, थोड़े टाइम के लिए करके छोड़ दूँ या उससे इरिटेट हो जाऊँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना था. तो आर्ट दैट वे fascinated me a lot. सो द फर्स्ट थिंग वाज़ दैट मुझे परस्यू आर्ट इसके लिए करना था क्योंकि मुझे वो लाइफ़स्टाइल चाहिए थी, जिसमें ज़्यादा मज़ा आए काम करने में. तो वो fascinating था. आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू न्यू आर्ट फॉर्म सिंस आई वाज़ अ चाइल्ड. बहुत सारी स्टोरीज़ भी है जहाँ पे मैं स्कूल में जो पोएम्स हमें, जैसे कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट है, पोएम के कुछ क्वेश्चंस होते थे, उसका आंसर लिखना होता था और पोएम को भी हमें कॉपी करना होता था नोटबुक में. तो साथ में जो डायग्राम्स होते थे, मैं वो भी ड्रॉ करता था. Okay. तो माय टीचर्स यूज्ड टू थिंक दैट मैं मेरे पेरेंट्स से करवा रहा हूँ, जैसे तू करवा. तो माय टीचर्स यूज्ड टू थिंक कि मैं मेरे पेरेंट्स से वो काम करवा रहा हूँ. Okay. तो मुझे काफ़ी हेट्रेड मिलता था कि ये शायद लिखवाता भी उनसे है और काम भी उनसे करवाता है, ड्राइंग भी उनसे करवाता है. इट वाज़ सो गुड. जो एज पे मैं कर रहा था, इट Hmm. वाज़ सो गुड फॉर दैट एज. सो लेटर आई पिक्ड अप आर्ट. मुझे करना था वो आर्ट ही था. सिंस आई वाज़ अ चाइल्ड, आई स्टिल रिमेंबर वन टीचर आस्क्ड मी. सबको पूछ रही थी वो स्टेज पे बुला के कि तुमको क्या करना है, एंड आई सेड आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट. सिंस दैट एज आई वाज़ वेरी क्लियर. आई वाज़ इन थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड. Okay. Yeah. My parents forced me to do engineering, and I did textiles engineering thinking textiles engineering में कुछ तो डिजाइनिंग रिलेटेड होगा, बिकॉज इट सीम्स लाइक दैट टेक्सटाइल्स जब हम बोलते तो, बट ऐसा कुछ था नहीं. इट वाज टेक्निकल. टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग में स्टडी अबाउट हाउ टू मेक फैब्रिक, और Hmm. उसकी मशीन की स्टडी होती है, उसकी मशीन के मैकेनिज्म्स की स्टडी होती है. तो इट वाज वेरी टेक्निकल. देयर वाज नथिंग रिलेटेड टू डिजाइन. सो फर्स्ट ईयर टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग, आई वाज क्लियर कि मुझे ये तो नहीं करना, एंड आई वाज स्टडीइंग इट सो दैट आई कैन कम आउट ऑफ इट. मुझे बीच में ड्रॉप नहीं करना था, Hmm. और मुझे फेल भी नहीं होना था, ताकि मैं फंस ना जाऊं. इसके लिए आई वाज क्लियरिंग इट आउट. लास्ट डे पे पढ़ के क्लियर कर रहा था. एंड string art happened to me in a very different way. Like, one of my friends shared a video, WhatsApp video with me. Hmm. और उसमें स्ट्रिंग आर्ट का एक बंदा है जो स्ट्रिंग आर्ट का पोर्ट्रेट बनाता है, और वो पोर्ट्रेट का जो प्रोसेस था वो उसने रिकॉर्ड किया था. इट वाज नॉट अ ट्यूटोरियल काइंड ऑफ अ वीडियो जिसमें वो सिखा रहा है कि कैसे करना है, बट इट वाज अ प्रोसेस वीडियो जैसे हम देखते हैं Hmm. इंटरनेट Hmm. पे रील्स पे, वैसा कुछ वो था.
तो जो प्रोसेस था इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. उसने पहले बोर्ड लिया, ड्रॉ किया, और वो पोर्ट्रेट बना रहा था जस्टिन टिम्बरलेक आर्टिस्ट का. तो उसने स्टार्ट किया नेलिंग करना, एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ नेल्स. और तब तक क्लियर नहीं था कि करने क्या वाला है. एंड देन ही टाइड अ थ्रेड ऑन इट एंड ही स्टार्टेड attaching that thread to other, like all the other nails. Or it seemed very cool to make a portrait with string art. So वो देख के ऐसा लगा कि I also want to make a portrait of string art of myself so that I can keep it at my place and I can show it to other people because it was so cool. So it happened that way, and I started learning that art form, and straight up I made a portrait with string art, which is now one of the toughest things in this category. String art में कोई अगर पोर्ट्रेट बना रहा है तो उसे बहुत अच्छे से स्ट्रिंग आर्ट आता है, ऐसा माना जाता है. तो मैंने तो फर्स्ट टाइम में ही पोर्ट्रेट बनाया था, खुद का बना लिया. क्या बात. इट टुक मी 11 days टू कंप्लीट इट. और मेरे हाइट जितना बड़ा था वो पोर्ट्रेट. एंड देन a lot of people started asking me about this thing where they wanted such similar pieces कि हमें भी चाहिए, क्या कॉस्ट होता है. और फिर I started taking workshops. It's a very interesting story. MSU Architecture Building. So they host this event every year. The name of the event is Reflections. Okay. It's a very popular event. Every year Reflections होता है वहाँ पे. और वो लोग कुछ आर्टिस्ट को बुलाते हैं टू टेक वर्कशॉप्स. तो मुझे वो लोगों ने इनवाइट किया, और आई वॉज 18 years old back then, and I was teaching 26, 27 years old architecture students, and there were 50 plus students there. So मुझे ये पता चला कि people wants to learn this art form. जितना उन्हें खरीदने का मन है उससे ज्यादा उन्हें सीखने का भी मन है, because it's very interesting. और वो लोगों ने सीखा और आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स ने सीखा. तो वो लोग को मैंने जब सिखाया तब आई फेल्ट के दिस इज समथिंग. देन आई स्टार्टेड टेकिंग वर्कशॉप्स फ्रॉम देयर. इंटरेस्टिंग. दिस इज द स्टोरी. तो मुझे ये जानना है कि स्ट्रिंग आर्ट का कुछ walk us through the history or some sort of origin of string art, because it sounds very fascinating. At the same time, if I look at it, if I've understood a few things about string art. You explained to me when you were taking those workshops at Odyssey, but for me it was difficult because I don't know how to do art. So for me every single art form is difficult, but string art I found the most difficult because you need to work with nails and Measurements threads and everything. yeah. So what's the history and what's the significance of this art form? So string art is very pretty old art form actually. It's not something that I have created. Like I said, a lot of participants which came in my workshops, they told me that ये art form हमारी मम्मी ने हमको बोला कि हमने हमारे टाइम में किया है, या मेरी मम्मी ने कुछ बनाया था स्ट्रिंग आर्ट से, या मेरी खुद की मदर ने मुझे कहा था कि ये दिस आर्ट फॉर्म वी यूज्ड टू डू इन आवर स्कूल टाइम्स. So it is an old art form. We have few proofs that even Leonardo da Vinci did in this art form in his times. He made 3D structures out of it, and तब से होता आ रहा है. The guy who made Mona Lisa, he also made string art pieces in his times. So string art का origin तो exactly पता नहीं है, but we know that this art form is very much connected. The geometrical part of string art is very much connected to the golden ratio and the Fibonacci series. Okay. So all the designs that we form, it follows the golden ratio, the Fibonacci series. To all those people who don't know what is Fibonacci sequence or series, so it's a ratio that if I calculate 1 plus 2, it comes 3, and 3 plus 2 5. Last two numbers को मैं add कर रहा हूँ, then 5 plus 3 8, and going on like that. So जो भी number मिलता है हमें, that number falls into the Fibonacci sequence. Okay. And we divide the last two numbers, and the number comes, what you said, 1.618 is the number. So that is the golden ratio.
और ये जो सीरीज है वो फॉलो करता है. दैट्स व्हाई स्ट्रिंग आर्ट इज वेरी फैसिनेटिंग एंड द ज्योमेट्रिकल डिजाइंस दैट आई मेक आर वेरी फैसिनेटिंग. और मतलब इट फॉलोज एवरी नेचुरल फिनोमिना. जो भी डिजाइंस है, इवन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द सर्कल ऑफ लाइफ, द ट्री ऑफ लाइफ, ये सारे जो सेक्रेड ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स भी है, इफ यू सी, वो भी कहीं ना कहीं फिबोनाची सीक्वेंस फॉलो करते हैं. और स्ट्रिंग आर्ट की जो ज्योमेट्रिकल डिजाइंस है, वो सारी डिजाइंस मेजरली जो मैं सिखाता हूँ मेरे वर्कशॉप्स में भी, वो भी सब फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. नाउ व्हाई आई गॉट इनटू स्ट्रिंग आर्ट, दैट इज बिकॉज when I saw string art for the first time, it seemed to me like stars constellations. जो हमने बचपन में पढ़ा है, वो ऐसे डॉट्स को कनेक्ट करके वी यूज्ड टू मेक लाइक फिगर्स. तो ये कुछ हद तक वैसा लगता है. जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये स्टार्स कॉन्स्टेलेशन की तरह है, एंड आई एम वेरी मच फैसिनेटेड विथ स्पेस. मुझे स्पेस के बारे में ऐसे जानना और उसके बारे में बात करना बहुत पसंद था. तो इवन माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू, मेरा एक वन ऑफ द मेमोरीज दैट आई हैव, रात को खाना खाने के बाद टेरेस पे जाता था मैं. तब हमारा जो घर था उसमें ऐसा था कि वो एक वॉल जो कनेक्टेड होती है दो घरों से, तो वो टेरेस पे जो एक वॉल होती है उस पे मैं लेट के से ऊपर आसमान में देखता रहता था. तब लकीली हमें स्टार्स दिखते थे, अब तो दिखते भी अब तो नहीं. नहीं दिखते. तो तब मैं देखता था एंड यूज्ड टू कीप ऑन वॉचिंग इट लाइक फॉर आवर्स. कभी कभी तो 1-2 घंटे तक ऐसे ही देखता रहता था. तो आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड विद स्पेस सिंस चाइल्डहुड. सो वो मुझे ऐसा कुछ फील हुआ जैसे आई एम कनेक्टेड back to the childhood again. So this art form is something that I tried a lot of art forms, but string art is something which stayed with me for this long. And I always mention that कि रह गया मेरे साथ. बाकी सारे art forms करे मैंने, सीखे, और but string art रह गया. Also बहुत यूनिक था. थोड़ा अगर कमर्शलाइज करने जाए तो ऐसी चीज थी जो कोई और नहीं कर रहा था. सिखाने जाए तो कोई ऐसी चीज थी कोई और नहीं कर रहा था. फॉर ऑल दोज रीजंस एंड ऑल्सो बाय लक मैंने इस आर्ट फॉर्म को पिक किया एंड आई एम डूइंग इट. दिस ओरिजिन और ये सब तो ऐसे कुछ है नहीं, बट या दिस इज देयर. As you rightly mentioned, the golden ratio and the art form's connection with the divine. I've recently visited Dharamshala, और वहां पर मैंने बुद्धिस्ट पेंटिंग्स देखे. उन सब आर्टिस्ट को मैंने देखा. प्लस मैंने कांगड़ा आर्ट म्यूजियम भी मैंने विजिट किया. तो वहां पर मैंने बहुत सारे मिनिएचर पेंटिंग्स देखे, और उसमें देखा कि इतने छोटे स्केल पे वो जो डिटेलिंग करते हैं. हम अगर उनको पेंटिंग में घर दिखाना है तो वो सिंपली 2D जैसे दिखा सकते हैं, 2 लाइन ड्रॉ कर दिए, घर बना दिया. लेकिन मिनिएचर में भी उन्होंने सारी डिटेल्स जैसे हमारे घर में होती है वो सब बहुत ही डिटेल में दिखाया था. प्लस जब मैंने वो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स देखे और उनको उन सब आर्टिस्ट को लाइव सब कुछ स्केच करते हुए या फिर ड्रॉ करते हुए या कलर्स फिल करते हुए देखा, आई गॉट सो फैसिनेटेड. पर फिर उससे क्वेश्चन ये भी आता है कि आर्ट फॉर्म, एनी आर्ट फॉर्म इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सेक्रेड. कि बहुत बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं वो जो आर्ट फॉर्म को वो सीधा ये नहीं सोच सकते कि अगर मैंने ये आर्ट फॉर्म सीखा या कुछ किया या फिर पेंटिंग बनाया या कुछ भी बनाया तो मैं उसको इतने में बेच सकता हूँ या इसका कुछ कमर्शियली ये हो सकता है, राइट. वो हमेशा मतलब वहां पर एक नॉर्बुलिंका करके एक इंस्टीट्यूट है जो एक्चुअली तिबेटियन लोगों ने बनाया है, क्योंकि दे हैड टू लीव देयर कंट्री एंड दे आर हियर इन एग्जाइल. तो उनके लिए वहां का नॉर्बुलिंका जो उनका पैलेस था उसका रेप्लिका जैसा बनाया है, जो इंस्टीट्यूट में 300 से ज्यादा वर्कर्स ऐसे आर्टिस्ट काम करते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं कि आर्टिस्ट जो है अलग अलग पेंटिंग्स और सब बनाते हैं, और वो इंस्टीट्यूट वो पेंटिंग्स को, वो जो स्क्रॉल पेंट, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स जनरली स्क्रॉल वाले होते हैं, और अलग से कांगड़ा में जो मैंने बोला मिनिएचर, तो वो सब चीजें वो लोग एज एन इंस्टीट्यूट बेचते हैं. लेकिन एज एन आर्टिस्ट वो खुद से नहीं बेचते. उनका काम क्या होता है, हर रोज सुबह आना है, पेंटिंग्स करने और इंस्टीट्यूट को देना है. इंस्टीट्यूट विल डू द जॉब, राइट. सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ any art form is the most difficult part for any artist. Exactly. Right? But how did you crack that? क्योंकि मैंने because I am fascinated with art, I've met various artists, and I've always found that artists do not consider commercializing their art, but you have cracked that
crack that part where you are doing workshops, you are selling your art, and you've also trying to start your own brand. So how are you dealing with all these things, and how did you crack that? So, to be honest, artist has to die in order to do sales. थोड़ा तो मरना पड़ता है उसको, Okay. क्योंकि इफ यू टॉक प्योरली अबाउट आर्ट, तो ऐसा है कि दोनों, लाइक सेलिंग आर्ट एंड क्रिएटिंग आर्ट आर टू डिफरेंट होराइजन्स, और इसका बैलेंस ढूंढना पड़ता है हर एक आर्टिस्ट को इन ऑर्डर टू सस्टेन इन दिस मार्केट. सो अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और बहुत प्योरली अपनी पेंटिंग्स बना रहा हूँ विदाउट एनी थॉट ऑफ कमर्शलाइजिंग इट, दैट इज वेरी गुड टू क्रिएट, लाइक प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनेगा उससे, बट इन ऑर्डर टू सेल थोड़ा तो उसको मुझे कमर्शलाइज करना पड़ेगा. या तो मेरे सेल्स जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, या मैंने किसी को हायर किया हुआ है जो मेरे लिए सेल्स करे, तो शायद वो चीज़ हो सकती है. तो मैं प्योरली सिर्फ आर्ट बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, और एक बंदा है जो प्योरली सेल कर रहा है, हु इज कनेक्टेड विथ मी. मेरे केस में सिंस बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड इट, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था ही कि क्रिएट करना एक चीज़ है और उसको बेचना एक चीज़ है. अगर मुझे कमर्शलाइज कैसे करना है इस आर्ट फॉर्म को, क्या करूं जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, तो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था ही. और मैं हमेशा से स्केलेबिलिटी के एक पाथ पे जाने का ट्राई करता था. जैसे अभी भी तुम देखो, तो आई ट्राई टू गो टू डिफरेंट डिफरेंट सिटीज फॉर द वर्कशॉप्स. देन आई हैव मेड किट्स ऑफ स्ट्रिंग आर्ट. ठीक है, स्ट्रिंग आर्ट की किट्स बना ली, ताकि किसी को अगर वो, मैं उनकी सिटी नहीं जा पा रहा, एंड इफ दे वांट टू बाय इट और एनीबॉडी वांट्स टू बाय इट इन बल्क, दे कैन बाय इट. सो मैंने उसको एक तरीके से कमर्शलाइज वैसे किया. If I talk about Pariverse, my clothing brand, so it's also that I wanted to showcase my paintings. Now I'm not that kind of an art, like I'm not saying, but मुझे वैसे एग्जिबिट करने का मूड कभी भी था नहीं कि मैं मेरी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन करूं. जब तक मैं थोड़ा सा नोन नहीं हो जाता, एग्जीबिशन मेक्स नो सेंस टू मी. करेक्ट. तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपनी पेंटिंग्स को प्रिंट करूंगा क्लोथ्स पे, और फिर उस तरह से उस पे मतलब जो पेंटिंग्स भी होगी वो कुछ इस तरह की होगी जो स्पेसिफिकली मैंने क्लोथ्स के लिए ही बनाई. इट्स नॉट दैट मैंने एक पेंटिंग बनाई और मैंने उसको छाप दी मेरे टी शर्ट्स पे. सो मैंने वो पेंटिंग्स भी वो स्पेसिफिकली टी शर्ट्स के लिए ही बनाई कि वेन एवर यू विल वेयर माई आर्ट, यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील दैट एक ये भी है कि कुछ बहुत ऑफ होता है या कुछ बहुत एक्सट्रीम होता है आर्ट में भी. कोई ऐसी चीज जिसका अडेप्टेबिलिटी इतना नहीं है, कोई सोच कुछ थोड़ा ऑकवर्ड है, तो भी तुम्हें पहनने में थोड़ा सा ऐसा होगा कि यार मैं ये कैसे पहनूं. तो मैंने हमेशा से ऐसा सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीजें प्रिंट करूं, ऐसी पेंटिंग्स बनाऊं जो प्रिंट करूंगा जो किसी को पहनने में ऑकवर्ड फील ना हो, एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंट फील हो. एंड ये तो है ही कि क्लोथ्स मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट, पावरफुल. क्लोथ्स तुमको एकदम पावरफुल फील करवा सकता है. ओनली क्लोथिंग पहन के तुम्हें ऐसा फील हो सकता है, तो इट्स वेरी सेल्फ एम्पावरिंग. तो वैसी चीजें मैं प्रिंट करूं ताकि किसी को वो फील हो. तो दैट वाज द पॉइंट. बट या कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कमर्शलाइज कैसे किया, तो सिंस बिगिनिंग लाइक आई सेड, मेरा था ही आइडिया कि मुझे इसको कमर्शलाइज करना है, इससे रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग अ जॉब और मैं पार्ट टाइम मेरा ये काम कर रहा हूँ, वेयर आई एम कीपिंग दैट बैलेंस कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा मेरे पास आ रहा है. तो मेरे पास में हमेशा से ये तो था ही कि मुझे इसमें से ही पैसा जनरेट करना है. सो मैंने क्रैक तो अभी भी कहूँ तो मेरे माइंड में तो मैंने क्रैक नहीं किया है, मैं हमेशा से ट्राई कर रहा हूँ, बट आई कैन हेल्प अदर आर्टिस्ट नाउ टू क्रैक इट. सो या दिस इज वेयर यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स. क्योंकि हम मार्केट में है, अगर मेरा कोई आर्ट फॉर्म है, ऐसा तो है नहीं कि मैं जब तक किसी को बताऊंगा नहीं तब तक उसको कैसे ही पता चलेगा. तो मुझे कोई ना कोई तरीके से जरिए से पहुंचना है. जैसे मैं वियर्डली जब मैं मेरा वर्कशॉप्स प्रमोट करता हूँ तो मेरे पीसेस भी सेल होते हैं. लोगों के पास में जैसे पता चलता है कि ये बंदा सिखा रहा है, और एक साइकोलॉजिकली ऐसा भी है कि अगर तू कोई चीज सिखा रहा है तो वो चीज तुझे बहुत अच्छे से आती होगी. ठीक है, तो वो एक
ऐसा बिलीफ बिल्ड हो जाता है लोगों के माइंड में कि ये हम्म सिखा रहा है तो इसको तो आता ही होगा। हम्म तो उस तरह से मेरा काम भी काफी बिकता है, जबकि अगर मेरा सोशल मीडिया देखे, इट्स मोस्टली अबाउट वर्कशॉप्स, हम्म टीचिंग आर्ट, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग आर्ट, बट स्टिल पीपल बाय फ्रॉम मी। हाँ, Yeah, so it interesting. works that way. I guess if I summarize commercialization of art, I would say that adding philosophy to your artwork and explaining that to people can Okay. have greater impact for them to consider that yes, I want to purchase this person's art forms or whatever he has created or she has created. तो और क्योंकि I've had many conversations about J. Krishnamurti and other people, even Osho, and I found that you've always been fascinated with philosophy equally, Right. right? And all those things that you have done till now, or you're trying to do, have some sort of thought process, not just doing it for the sake of it, right? You're not out of nowhere, you are waking up and thinking that yes, I'm going to paint this or I'm going to do this artwork. No, you're putting a lot of processes, lot of thoughts behind everything that you're doing. Plus you love philosophy and you like explaining things in that way. Maybe that sense of philosophy, that sense of explaining things, can also make you a better salesman without letting your artist die. True. So, explaining art, I personally feel that you don't have to explain it in a way that you're trying to sell it, you know. So, when you try to sell, तो वो थोड़ा सा तभी थोड़ा स्पॉइल हो जाता है वो। हाँ, तो when- desperation लगता है थोड़ा. हाँ, तो एक तरीके से वो भी है, बट मेरा कभी भी इंटेंशन वो नहीं होता कि मैं ऑथेंटिक रहूं हाँ. ताकि लोग खरीद ले। मैं एक्चुअल में ऑथेंटिक रहता हूँ। तो ऑथेंटिक रहना ही बेस्ट है जब तुम्हें कुछ बेचना है तो फिलोसॉफी से मेरा कनेक्शन इसके लिए है क्योंकि हमेशा एक इंसान को कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए। मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या हो सकता है? लाइक बीइंग अलोन, आपके ऊपर कोई है नहीं जो आपको गाइड कर रहा है। हमें ही मार्केट में कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसका कोई डेटा भी नहीं है, जो तुम उसको स्टडी करके तुम कर रहे हो। ठीक है, कोई ने करा हुआ है ऑलरेडी, जो तुम उसको देखकर कॉपी कर रहे हो। जो चीज कर रहा हूँ मैं, मार्केट क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज जिसका मार्केट ही नहीं था, उसका मार्केट क्रिएट किया और सेल किया। तो ये एक चीज होती है। अब इस केस में मुझे हमेशा से कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए होता था, क्योंकि मेरे माइंड में भी एक डिलेमा होता है, एक क्वेश्चन आता है कि भाई वेदर दिस विल वर्क और नॉट। नहीं हुआ तो क्या? मुझे जैसे हर एक इंसान के नॉर्मल बेसिक एक्सपेंसेस तो होते ही है। आई एम नॉट डूइंग अ जॉब, आई हैव टू बेयर ऑल दोज एक्सपेंसेस, तो कैसे होगा? दोज वर द प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल डेज। बहुत प्रॉब्लम्स होती थी मुझे करने में, और मैंने काफी काफी अपने आप को लेट डाउन भी किया और ये सारी बट एक्सपेरिमेंट्स भी किए, और फाइनली फिर मुझे अपने आप पर बिलीफ आना शुरू हुआ। बट मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जब मैं लो फील करता था, तब मैं मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन लोगों से लेता था, जय कृष्णमूर्ति से, क्योंकि कोई मेंटर नहीं है तो वो लोगों से इंस्पिरेशन लेता था, क्योंकि माइंड ही सब कुछ है। इफ यू आई हैव सीन पीपल जिनका काम अच्छा नहीं है बट वो इतने कॉन्फिडेंट है तो उनका काम बिकता है। Correct. आई हैव सीन पीपल जिनका काम बहुत अच्छा है बट वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है तो उनका काम नहीं बिकता है। सो इट ऑल कम्स इनटू दैट प्ले जहां तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मेंटल हेल्थ कैसा है, उसके बेस पे तुम्हारे साथ में चीजें होती है। ठीक है, आज मैं अगर हर चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ तो मेरे पास हर चीज आती रहती है। अगर मैं हर चीज के लिए इरिटेटेड फील करता हूँ कि यार क्या है, तो हर चीज मेरे पास से जाती रहती है। तो वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना, मेरे लिए स्पिरिचुअल कनेक्ट होना बहुत जरूरी था। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू टॉक अबाउट कृष्णमूर्ति, ओशो, ऑल दोस पीपल। दे हैव लाइक क्रेजी अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, लाइक कुछ लूज करने के लिए ही नहीं है, तो बहुत अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, मतलब मैंने ये भी हमेशा से देखा है कि आर्टिस्ट हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी टू एन एक्सटेंट, प्लस फिलोसफी, क्योंकि मे बी क्योंकि आर्ट ऐसा है ना कि वो टेंजिबल चीज नहीं है। आर्ट इज नॉट टेंजिबल, यू कांट put fingers on any artist or any art form saying that oh these are the reasons why,
because a lot of fields like engineering, like medicine, वो सब fields में क्या होता है कि products है, चीजें हैं, already exist करती है. It's easy to put fingers कि इस चीजों की वजह से ये create हुआ. मतलब ingredients कौन से हैं वो सब मिल जाते हैं. Art has no ingredients. Art can be created through that inspiration that you were talking about. Let's say you thought about a painting, and as you mentioned, you can't paint something when you are thinking about something. You need to go beyond your thoughts, your ideas to create something. Right. So maybe that's why there is this connection with spirituality and philosophy. Right. When it I comes to also art. paint. I don't paint things. I paint a feeling most of the times. Like I am. Let's say I was in some कहीं घूमने गया हूँ और बहुत ग्रीन देखे मैंने और फिर वापस कमिंग बैक होम आई एम मिसिंग दैट दोज ग्रीन कलर्स तो मे बी आई विल पेंट समथिंग विच इज ग्रीन so that I feel that the painting or weirdly क्योंकि I know how to paint so I'll match those colors as well. ग्रीन में भी वही शेड शायद मैं यूज करूंगा ट्राई करूंगा वो शेड फॉर्म करने का और वो पेंट में इंटीग्रेट करने का ताकि वो फीलिंग को मैं कैप्चर कर पाऊँ and whenever I will look to that painting or whatever I have created I will feel that connect to that place because अभी मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ मेरे टूर से घूम कर आया हूँ तो शायद मैं वो पेंटिंग में उसको इंटीग्रेट करके आई कैप्चर इट लाइक अ फोटोग्राफ सो स्पिरिचुअल कनेक्ट या तो है तो सही मेरा तो स्पिरिचुअल कनेक्ट का रीजन ये था कि आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर लाइक आई सेड बाकी बहुत सारे जैसे हमें जो स्ट्रेस होता है और ये सारी चीजें होती है उससे डील करने के लिए आई यूज टू watch all these content by J. Krishnamurti and J. Krishnamurti is a change. He changed my life in a certain way. I don't feel मतलब मुझे लगता है अगर कोई J. Krishnamurti से इंट्रोड्यूस होता है उसके लाइफ में तो चेंज हो ही जाएगा. He's a different kind of a person. We have discussed philosophy and art and commercialization of art, but the fundamental question that I always feel like asking to any artist is, what is art in your opinion, and how do you define artists or art? I mean, a lot of artists say that anyone can become an artist, right? But what is it that you feel that yes, this is art, or this is how you define art, or this is how you become an artist? Okay, so I feel art is an idea, something which is not generic, something which has been thought for the first time. कोई ऐसी चीज जो मैंने आज पहली बार सोची आई वो एक आइडिया फर्स्ट टाइम वो उसका बर्थ हुआ सो दैट इज आर्ट समथिंग लाइक इवन इफ दैट इज अ पेंटिंग और आर्ट में सिर्फ मतलब पेंटिंग्स और इसकी बात नहीं कर सकते और भी जितनी भी फील्ड्स है बट ऐसा कोई आइडिया जो पहले कभी नहीं हुआ आई फील दैट इज आर्ट टू मी एंड what was the next thing that you asked? How do you define an artist? I mean, how do you pinpoint by saying that yes, this person is an artist based on certain things that they are doing? That's what those people who are doing something which is very different, which has not been done before. That is, those people are artists, and that is art to me. तो वही चीज है कि कोई ऐसी चीज जैसे मैंने बोला ना जो कभी हुई नहीं है तभी तो ऐसा लगेगा ना यार इंटरेस्टिंगली ये बंदे ने कैसे सोच लिया इस चीज को ये कैसे हुआ ये पेंटिंग्स में कोई सर्टेन कंसेप्ट या कुछ ऐसी चीज बनाई जो पहले कभी नहीं हुई तो ये कैसे सोच लिया इसने सो दैट इज आर्ट पर जैसे अगर हम पहले के टाइम की बात करें we have a few examples of different artists which are famous, so to say. Pablo Picasso is famous, Da Vinci is famous. There are a few artists, I forgot the name of the other artist, but there are plenty of artists who are famous in the history of humankind. But currently we have a lot of universities, colleges, there are a bunch of institutes who are teaching art, right? So in a way we are
because we are defining art as something abstract, something not very generic, something that is not been created before. But at the same time, we are creating a factory-like culture where we are teaching art to a bunch of people. So how do they stand out? So basically, what is happening currently in any field, even art, जब कुछ सैचुरेट हो जाता है, अब ऐसा है कि आर्ट में ऐसा कुछ बहुत कम चीजें बची है जो नहीं हुई है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज फैक्ट्री लाइक, क्योंकि फिर डेटा आ जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी हम उस स्पेस में फॉल करते हैं जहाँ पे वी कैन सी कि क्या चीजें चल रही है क्या चीजें नहीं चल रही है, वी कैन गेट द डेमोग्राफिक्स ऑफ थिंग्स जो पहले नहीं था. तो इस वजह से लोग फैक्ट्री लाइक कल्चर बिल्ड हो रहा है अराउंड आर्ट. और एक चीज ये भी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर मैं ये बात करूं कि एज अ कंसेप्ट, इफ यू टेक आर्ट जस्ट एज अ कंसेप्ट, कि कोई ऐसी चीज बनाना, आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, जो ऐसी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है जो मैं कर सकता हूँ विथ आर्ट जो आज तक नहीं हुआ, राइट, एज अ कॉन्सेप्ट. जैसे एक आर्टिस्ट कैसे जाना जाता है, तो होता क्या है कि थ्रू आउट अ लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट वो हर एक चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, एंड देन वो एक चीज पे लैंड करता है जो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, जो वो बहुत अच्छा है करने में, और वो चीज उसका आइडिया था या वो चीज का बर्थ उसका था. लाइक इफ यू टेक पिकासो एज एन एग्जाम्पल, तो उनका जो स्टाइल है, दैट स्टाइल इटसेल्फ इज वेरी, यू नो, eye catching. Whenever you will see the art which is done by Picasso, you will know that ये Picasso ने किया है. So that is the identity of an artist. तो वो एक आइडेंटिटी बिल्ड कर देता है. हर एक को यूएसपी होना जरूरी है. मेरा यूएसपी क्या है या तुम्हारा यूएसपी क्या है, तो वो उस तरह से आर्टिस्ट अपना एक यूएसपी बिल्ड करते हैं. जैसे मैं स्ट्रिंग आर्ट के लिए जाना जा रहा हूँ, तो मेरा यूएसपी स्ट्रिंग आर्ट है. तो वैसे अलग अलग आर्टिस्ट अपना एक यूएसपी बिल्ड करते हैं. सो वो है. पर जैसे पहले के टाइम में जितने भी हमने एग्जांपल्स दिए, वो इसलिए भी शायद फेमस है, also because of their skill and their artwork, but at the same time they are famous because they did not have to worry about basic needs, because they were taken care of by patrons in different era. जैसे हम राजा रवि वर्मा की बात करें तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ took care of him because he was there as a patron. So Raja Ravi Verma did not have to worry about creating art, right? So he was free, his mind was free, he could create a lot of things. But in today's time, it's difficult because we need to think of art as a tool of survival. Because if you, let's say I'm studying in fine arts faculty at MSU, by the end of my course, I would need myself to be able to earn money out of my artwork, out of my skills that I've learned through all these years, right? So how difficult it is in today's time for an artist to survive or to navigate, because as we talked about, it's becoming a factory like. At the same time, a lot of people are doing art. It doesn't matter whether I am an established artist or not. Let's say if I've created something which catches someone's eye, and they might want me to sell those products, sell those artworks. So let's say if I've created a painting and I keep on creating a replica of that particular painting, and I keep on selling the same painting to each and every person, right? I might well as be able to earn money, but I'm still not an artist because I've not created anything apart from that one particular painting. Right. So during this factory like era, plus when you think of art as a tool of survival, how would you navigate? So in today's generation, you asked that how an artist can survive. That is the question, right? So I feel that every artist should try different art forms. Nobody should pursue art by looking at the things that are happening. जैसे हम सक्सेस ही देखते हैं,
ये आर्टिस्ट सक्सीड हुआ, इसके पास इतना पैसा है, हमको भी ये करना है, right? But if you see the probability of it, there are only few percentage of people who like very few percentage is there when it comes to art जो successful होते हैं compared to the other businesses. art में तो बहुत ही कम percentage है जो succeed होते हैं. तो when you pursue art, you always have to think of in today's generation you have to separate it in two things. One, that you are doing just for creating, and one that you are doing to sell. एक चीज जो तुम्हें खुश रख रही है और एक चीज जो तुम बेच रहे हो और तुम्हारे पास में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. तो मैंने भी वही ट्राई किया था. तो ये दो चीजों के ऊपर किसी को भी ध्यान देना चाहिए. कोई भी आर्टिस्ट को एक रेवेन्यू स्ट्रीम होना ही चाहिए. अगर आर्ट से ही तुम्हें रेवेन्यू जनरेट करना है तो हाँ, तो वहीं से एक रेवेन्यू स्ट्रीम होना ही चाहिए. और एक जहाँ पे तुम क्रिएट करके खुश हो रहे हो, ठीक है, वो वैलिडेट होगा शायद सालों के बाद, क्योंकि दैट विल टेक टाइम, दैट मे टेक टाइम टू जनरेट मनी. अगर मैं आज वो वाली भी बात है कि आई एम माइनिंग, ठीक है, और यहाँ पे डायमंड है और मैं खोदते जा रहा हूँ और डायमंड आने ही वाला था और मैंने छोड़ दिया. एक कंसिस्टेंसी भी होता है ना ब्रो in anything. If you are consistent with it, if you are doing something every day, so probability of becoming successful becomes high. If I try something for 2 days and if I say that I failed in it, so उसका relevance ही नहीं है. If I try something for 100 days, तो एक दिन तो होगा ना जिसमें मैं जीतूंगा. So that is where, if you are dealing with art, then you have to keep that in mind, because the success rate is very low. So you have to think of streams from where you can generate revenue. Like I said, I'm doing workshops. I don't know how many people will buy my art, but I know that people wants to learn my art. So that market is big. So I started teaching art. I don't know if somebody from a different city can come to a different city to attend my workshop. So if I'm not going to that city from where that person belongs, तो मैं वहाँ पे kit बेच सकता हूँ. So that's how I introduce kit to the market. So I am also trying to generate revenues streams through my art. इसमें है ऐसे तरीके जिससे तुम कर सकते हो, और आई एम श्योर कि और दूसरे सारे, अगर तुम कोई दूसरे टाइप के आर्टिस्ट हो उसमें भी है. तो हमेशा से सारे स्ट्रीम्स को नोट डाउन करके, जॉट डाउन करके ये जानना है कि तुम किस में अच्छे हो, एंड देन कंटिन्यू टू डू इट एंड ट्राई टू अप्रोच to those people as well. Like sitting here in Baroda, if I try to sell my art, teach my art, यहीं बैठ के सब कुछ करता रहूंगा तो शायद नहीं होगा. तो मैं ट्राई करता हूँ दूसरे सिटीज जाना. कोई बड़ी सिटी में गए, वर्कशॉप किया, वहां पे बेचा, तो वैसा भी है. तो हमेशा से ये सारा चीजें तो सोचना ही पड़ता है ब्रो. और ये रियलिटी है कि इंडिया में भी सक्सेस रेट आर्ट का बहुत कम है, और इन जनरल भी आर्ट का सक्सेस रेट बहुत कम है. हाँ, मतलब आर्ट इज लाइक गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ दोस पीपल, व्हाट यू सेड, के हम देखते हैं कि दूसरे एराज में पहले जो आर्टिस्ट होते थे वो लोग ऐसे थे. अब वैसे आर्टिस्ट नहीं है, शायद वो भी एक क्वेश्चन था. तो अब ऐसे आर्टिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है. अब सिंपल सी चीज है यार, वो जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि अगर मैं एक सिटी में हूँ जहाँ पे कोई एक भी किराना स्टोर नहीं है, तो जो किराना स्टोर एक खुलेगा वहां पे सब आएंगे. पर एक सिटी है जहाँ पे 100 किराना स्टोर है, तो अब क्या करना है? अब एक किराना स्टोर कैसे पॉपुलर होगा वहां पे? वो एक क्वेश्चन हो जाता है. या तो एक किराना जो सबसे पहले खुला था वो अभी तक चल रहा है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि लोग कनेक्टेड है उससे. एक किराना स्टोर जो सस्ते में दे रहा है तो शायद लोग कनेक्टेड उससे. तो फिर यूएसपी की बात आ जाती है. जब क्लटर होता है ना, तब लोग कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, या प्राइस में खेल लिया, या काम कुछ बहुत यूनिक है, या वो सब कुछ. एक यूएसपी हर एक चीज में, कोई भी फील्ड में किसी को क्रिएट करनी पड़ेगी एज अ पर्सनल ब्रांडिंग एज वेल. कि मैं आज एक बंदा हूँ, मेरा यूएसपी कुछ होना चाहिए कि लोग मुझे इस तरीके से जाने. करेक्ट. तो वो चीज आर्ट में भी करनी पड़ती है, यूएसपी होना चाहिए. हाँ, मतलब अगर हम कंक्लूड करें इस पॉइंट को कि इफ एन आर्टिस्ट
wants to commercialize their art, they need a bit of sales, a bit of philosophy or idea to what they are doing, plus a sense of being different in terms of whatever they are creating. Not just doing things because they want to be different, doing things which are actually different. yeah, maybe that may help Yeah, them. the what is there also. So anything which you are not, you cannot survive for a long period of time. You तुम can't be an imposter. टूट ही जाओगे. मतलब कोई भी चीज है, अगर मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी एन आर्टिस्ट, तो मैं ज्यादा दिन तक नहीं ही रह पाऊंगा. इफ आई एम आर्टिस्ट, लाइक खून में है मेरे, तो मैं उस चीज को करूंगा. मैं कोई भी चीज को कोई भी चीज का कोई, अगर मैंने, जैसे कि लोग कॉपी करते हैं, ये सारी चीजें कैसा है कि यू कैन नॉट बी, like you cannot survive, you cannot sustain in the market by doing those things. So in order to sustain, you have to find out what is actually that you want to do. Art may be what is actually that you want to do. You want to create an impact of the life, so the purpose is so strong that you will never run out of ideas. So that purpose should be strong, that you never ever run out of the ideas. तो हर एक इंसान का पर्पस होना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये मुझे ये करना है. इनफैक्ट क्लोथिंग, if you say clothing, maybe I also always mention about this creative director ऑफ वाइट जिनका ब्रांड है. Okay. How can I forget the name? So anyways, the creative director of Off-White, he used to work in Louis Vuitton first. He was the creative director of Louis Vuitton. Then he also had his own brand. So the idea of his brand was that I don't want to sell clothes, I want to inspire people. Okay. I want to inspire kids. My clothes are expensive so that people talk about it. कि यार ये कितना महंगा है. So that is the branding that he was doing. Oh, fascinating. He also एक scarcity generate करना कि my products are this many only. 200 पीसेस ही बनाए मैंने, इसके बाद मैं कभी 201 पीस नहीं बनाऊंगा, ना कभी ये वाला डिजाइन या ये कलर में ये वाला डिजाइन वापस कभी भी लॉन्च होगा. So that becomes the USP of he's creating demand and supply is low, so people will. That is also there, but my point is that उनका source जो है, जहाँ से उनका जो inspiration है, that is very strong, that he wants to inspire people. That what makes him an artist, ये है कि वो सोच पाए कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो सिर्फ इतना ही करना है. That strong sense, that strong urge to inspire people is what that also that idea makes him an artist, that I only want to make 200 pieces. Like who can think of clothes as a piece of art? That why limited number of pieces? Virgil Abloh was his name. Continuing your point of Virgil Abloh, who had created a brand based on this idea of inspiring people, and he has put his artwork through his clothes. You are doing something similar through Pariverse, and we have talked about Pariverse in detail a lot of times, right? We have given hours and hours while discussing Pariverse, but I want the world to know your philosophy behind Pariverse and how you are, because we have talked about commercialization of art as well, and this is the perfect example of starting a brand, an artist starting a brand of his own, where he or she is putting all these artwork, all the ideas into design, and then selling those designs in terms of clothing or any other form, and then building a brand out of it. So walk us through Pariverse and how you came up with this name as well, because Pariverse seems like a different name than usual brands. And what are the thoughts that came to your mind when you were thinking of this brand? Okay, so the Pariverse name comes to me by long ago. One of my friend, we were planning to start off a business, और तब हम लोग नाम सोच रहे थे, और तब हमें ये नाम दिमाग में आया था. इट्स वेरी सिंपल, कंबाइनिंग 2 words,
parallel plus universe gives you Pariverse. We also have that slogan, self supremacy, that we have to our brand. So that self supremacy is what, that we are बहुत ज़्यादा deep नहीं, but we have this world जहाँ पे parallel, which is a parallel universe, but our explanation of that parallel universe is that there is a universe where everyone is parallel. Nobody is like कोई hierarchy नहीं है, सब सेम है, सब पैरेलल लेवल पे है, सब इंडिविजुअल एक ही है. वैसे तो अभी भी ऐसा ही है, बट जैसे हमने हमारे माइंड में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए हुए, बट पैरेलल यूनिवर्स में सब लोग पैरेलल है, और वहां पे बिकॉज एवरीवन इज पैरेलल, एवरीवन इज सुप्रीम. व्हेन एवरीबॉडी इज ऑन द सेम लेवल, सब ही सुप्रीम है, कोई सुप्रीम है कोई नीचे, ऐसा नहीं है. तो सेल्फ सुप्रीमेसी कम्स फ्रॉम देयर. And I wanted to create clothes which makes you confident, powerful. So that was the idea. Now, to boil it down, Pariverse, I wanted Pariverse to be the portfolio of my learnings. Something where I show to the world that what I am capable of. So that was the only idea to starting Pariverse. The idea was so powerful that I want to do things in a certain way, like the marketing in a certain way, the designs in a certain way, talking about the brand in a certain way, creating content on Instagram in a certain way. So I wanted it to be very authentic, very raw, and talking real things with the brand, like the future plans of Pariverse. I'll talk a little about, ये बात हमने किया भी है. But the future plans are telling people that what is our thought behind the brand and what are the problems that you face when you are building a brand. So ये सारी चीज़ों के बारे में बात होगा. एट द सेम टाइम ये भी बात होगा कि तुम्हें क्यों ब्रांड नहीं शुरू करना चाहिए. एक चीज अभी ये हुआ कि इन अ रीसेंट मार्केट स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स हैव बीन लाइक क्रेजी. हर जगह स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स ओपन हो रहे हैं. सो जब ऐसा होता है तब एक इंसान कैसे स्टैंड आउट हो सकता है. वही बात आर्ट की जो हमने बात की थी कि इफ देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, देन हाउ कैन यू बिकम समवन वो लाइक जिनको लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, जिन पे ज्यादा अटेंशन आ रहा है, क्यों आएगा. जब ऐसा होता है तब यूजुअली एज अ कंज्यूमर अगर आप एक ही चीज बहुत बार देखते हो तो एक इंटरेस्ट तभी लूज हो जाता है कि चाहिए ही नहीं है. हर जगह हर जगह सब यही बेच रहे, नहीं चाहिए ही नहीं अब मुझको. तो ये कंज्यूमर माइंडसेट भी हो जाता है. एट द सेम टाइम इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव फॉर द पर्सन हु इज रनिंग दैट ब्रांड कि अब वो करे क्या, क्योंकि उसने सारा टाइम एनर्जी मनी इन्वेस्ट कर दिया, तो अब वो क्या करे. तो मेरा आइडिया बहुत क्लियर था कि मुझे एक क्लोथिंग ब्रांड से ज्यादा एक आइडिया सेल करना है, दैट थिंग्स आर पॉसिबल, that somebody can think of printing art onto the clothes, somebody can think of marketing the clothes in a certain way, somebody can do this where he sells the clothes at a price which is bonkers to a lot of people कि ये तो कैसे ही बेच रहा है इतने में, या ये तो मिलना मुश्किल है, या वो सारी चीजें. एवरीथिंग इज अ गिमिक इन द एंड ऑफ द डे, बट वो गिमिक किस तरह से कोई प्ले करता है, दैट इज द होल पॉइंट. सो मेरा पैरिवर्स से ये आइडिया था कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे मेरे जितने भी आर्टिस्ट वाले स्किल्स है वो मैं इसमें डालूंगा, बी इट इन द डिजाइन, बी इट इन द वे ऑफ मार्केटिंग, बी इट इन द वे ऑफ पोस्टिंग अ स्टोरी और टॉकिंग अबाउट द ब्रांड. हर चीज बहुत रॉ होनी चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए, और हर चीजों पे बात हो कि ये सिर्फ अच्छी चीजें ना बताए हम, द गुड साइड ऑफ द स्टोरी. That's abhi currently the bad side of the story is that a lot of brands are coming up. Bad side of the story is that a lot of young generation thinks that it is very easy to get into this market and start earning money, which is not true. A lot of young people are investing heavy amount of money in this and losing money at a very young age.
डेट में फंस जा रहा है या ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बहुत ईजी है। और एक बंदा है जिन्होंने इंटरनेट पे ऐसा प्रूव किया कि बहुत ईजी है, उसके वजह से ये चीज़ें हुई। हाँ तो हर एक चीज़ों के बारे में बात करना है मुझे, जो बैड साइड ऑफ द स्टोरी इज ऑल्सो दैट आई वॉन्ट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. So that is the whole idea of Pariverse. It क्योंकि when it comes to like clothing, it is very competitive. By the end of the day, it's a clothing brand, right? I can enter into the market by showing that मैं बहुत अलग हूँ, और शायद शुरू में थोड़ा बहुत चलेगा, but to sustain in the market, I have to be continuously evolving and doing things which are not done by anybody else. As an artist, that's what I think कि मुझे ऐसा करना है जो कोई ना करता हो, तो वो चीजें कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी, और दैट इज द होल गेम. अब जो इंसान ये क्रैक कर लेता है कि वो कंटिन्यूअसली अलग चीजें कर सकता है और करेगा, और वो चीजें क्योंकि इतनी अलग है जो पहले नहीं हुई है, तो मार्केट में चलेगी भी कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे. वो उसका सिक्स सेंस ही है, जो उसका बिल्डअप होगा बाय एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो बेसिकली पैरिवर्स इज अ रॉ फैशन आर्ट ऑन क्लोथ्स कंपनी, जहाँ पे वी टॉक अबाउट ऑथेंटिक थिंग्स, गुड एंड बैड, एवरीथिंग. We want to show every process. We want to show that, also want to show that don't do it if you are just doing it for the sake of money. क्योंकि why we are talking about this, because a lot of people are trying it अभी. नहीं तो मैं ये चीज के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि लोगों को लग रहा है बहुत इजी है. स्ट्रीट वेयर मार्केट अभी बहुत बूमिंग हुआ था कुछ टाइम पहले. कुछ एक दो ब्रांड्स थे जो बहुत पैसा कमाए. वो दोनों ब्रांड्स ने, क्योंकि उन लोगों के पास में वो अपॉर्चुनिटी था, जब वो लोग ने स्टार्ट किया था तब कोई थे नहीं था. तो वो लोग चले, और फिर उन्होंने ऐसा इंटरनेट पे बताया कि इट्स वेरी इजी, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल, like every day a streetwear brand, like hundreds of streetwear brands are opening up and failing at the same time. So that's what I want to do with Pariverse. I want to be authentic. Interesting. As I've always observed that through all our conversation, I've never come across a thought where I felt that you're not authentic or you're not being yourself. So I would think that the brand that you're trying to build will reflect your personality and Exactly. will work accordingly. So to those who are listening to this, if you want to purchase Pariverse clothing, you can go online and check out the pariverse.com. Drop 2 is coming soon, so you can purchase products which are there right now, and you can wait for the drop 2 as well. You can check out his Instagram, where he puts out latest designs of his brand, and you can also follow him for if you are interested in any form of art, and if you want to learn string art from him, then check out his page. Everything is described in the screen, and as well as in the description, so you can find everything we have talked about. It has always been fascinating to me whenever we talk about art, whenever we talk about philosophy, and I can talk about this and he can talk about this for hours and hours, but we'll conclude this episode at this point of time. And here's something interesting for me to do, because I've never been an artist. I've never done any painting by myself. Even during schooling, I had to take help of my mother and my sister to complete my paintings. But right now, here's something for me. So all those who are listening to this episode, please go to our YouTube channel, search for RiffScript. It's spelled RiffScript, and you will find this episode. And you can check out the end part where we are going to do this artwork, because it's going to be a fun to watch rather than listening to this episode. So let's jump onto the last section of this episode. Thank you. Let's go. So we are making an abstract painting now. Okay. So we won't. So I have few steps that we will do. It's pre-decided. So first things first,
हमें कलर्स चूज करना. Okay. So you have to decide. Either you can choose your favorite colors, or either you can, कोई सीनरी पर्सन जैसे मैंने बताया था ग्रीन कलर, तो ग्रीन लेना तो ऐसे कुछ या कुछ भी. एनी you have to just pick colors randomly. What colors do you want to pick? मुझे सनसेट का रिफ्लेक्शन जो होता है ना, उसकी वजह से वो जो शेड्स ऑफ रेड या ऑरेंज बन जाते हैं ना, वो वाले कलर्स ज्यादा पसंद है. ओके, तो हम वो वाले कलर करते हैं. ऐसे कभी पेंटिंग, टू ऑल दोस हु आर वाचिंग और लिसनिंग टू दिस, आई हैव नेवर डन दिस. आई एम स्कैर्ड अ बिट. So what we will do first, you have to squeeze out white color first. Okay. White color will help us blend all these colors क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क है. Okay. तो बहुत सारा white लेंगे. Okay. और ये वाले कलर्स ऐड करके उसको हम मर्ज करेंगे. Okay. ठीक है. Squeeze it. Yes. More. Okay. Randomly करना है एक ही जगह. Yeah, that's okay. Randomly. और करना है. No, that's fine. Okay. And now take the brush. Okay. Spread it across the canvas. थोड़ा thick रखना. Okay. Yeah. I'll show you how. Okay. You just spread like this. Okay, randomly. You can also hold the brush from here. Like this. That's Okay. the best way to hold the brush. Okay. वाटर से थोड़ा थिकनेस कम नहीं हो जाएगा? वही चाहिए. थोड़ा ड्राई करना कि बाहर ना जाए. Right? Now we can go like. I feel like Darshil Safari from Tare Zameen Par. Same. And you are Amir Khan. So we can start by using light color. Okay. And then we'll move to dark colors. Okay. So what we can do is you have to squeeze a little yellow at this part of the canvas. Okay. अब हम इधर तक उसको spread करेंगे. Okay. ये वाला part ना. हाँ. So just squeeze a little, not much, बस. It's enough. Okay. Now. फिर से. Now I think we should squeeze this color. थोड़ा सा ही करना. यहाँ बीच में? हाँ, थोड़ा सा ही करना. Yes. Now the last color on the top. Alright, now you have to start spreading this color. Okay. Like this. Right. Then do the same thing Okay. with this color. Okay. Across the canvas? Just this part? This part of the Okay. do like crisscross, Okay. like this. Okay. Okay. Perfect. Okay. Now move to the top part and spread this color. Okay. Oh, nice. You can use this color as well. Oh, yellow. Do you like this color? Yeah. Use this. Spread it. Okay. Across this part No, only, right? Only that part of the canvas. Okay. Now we will make the paints even. Okay. So that you have to mix the paints from here. Okay. Only this part, so that these both colors merge. I'll show you how. You hold it lightly. Okay. Just spread it like this. Just so that they are merged. Yeah. Okay. Till what part? Till this part? Here. Okay. While merging the two parts, hold it lightly. So I was also going to paint, but अब लग नहीं रहा होगा. अच्छा, okay. That's okay. मतलब मेरी स्किल देख के पता चल नहीं रहा है. नहीं नहीं ऐसा नहीं.
क्या इसमें से मेरा फेस बनेगा क्या? है सच में ही तारा जमीन पर जैसा करवा रहा है क्या मुझसे? And we make strokes. Okay. Now what we will do, take orange color here. With this brush, keep that brush aside. Okay. You have to do, you have to make strokes like this. Oh, okay. कहाँ तक? Try to keep the center part empty. और बाकी बस सिर्फ इतने पोर्शन में या पूरा? करेंगे दूसरे कलर से. अच्छा. Now from this part we will do with येलो? no, pink color. यहाँ से लेना है ताकि वो Straight line, straight. अच्छा. We are making lines, so start it from the edge. Okay. Okay. Sunrise. Okay. We want make a perfect sun. Okay. So rays हम लोग abstract बनाएंगे जैसे randomly ऐसे ऐसे. We'll start from here and make strokes like this Okay. with the ruler brush. Okay. And we will use white paint. इसमें तो थोड़ा कर्व्स आ सकते हैं ना? नहीं स्ट्रेट लाइन ही चाहिए. straight line. नहीं क्योंकि ये कर्व होगा नहीं मतलब perfectly. हाँ ओके. नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट मुझसे कर्व बनता है ना तो ये इसमें बाय डिफॉल्ट बाय स्ट्रेट ही होगा क्योंकि ये रोलर है. अच्छा. ओके. White color. Use my canvas as the palette for white color. इसके ऊपर रोल करना. थोड़ा सा पानी डालता. इसके ऊपर रोल करना. हाँ. रोल कर ऐसे एक you have to do अच्छा. so that you get white paint on your brush. So you have to start from this point and go say stroke. Make a यहाँ stroke. तक. Okay. Try not to make very even things. Okay. Bas. All right. I think that's it. Okay. इसके नीचे. बड़ा लिखो. एकदम आर्टिस्ट वाला साइन है. अरे भाई आज कौन सी डेट है भाई? 1 मई. आज कैसे भूल सकता है तू? But that's it from our side. I had a great fun talking to Vidur about art, string art, commercialization of art, and also had fun while creating that art piece. Thank you, Vidur, and thank you to all those who have been listening to us and watching us. You can search on YouTube RiffScript and you'll find all our episodes.
You can also find us on various podcasting platforms such as Apple, Google, JioSaavn, Ghana, etc. You can search for All Fingers and Thumbs. You can also go on our website, allfingersandthumbs.riffscript.com, to find out more about our podcast, our hosts, our guests, and what they feel about our podcast series. It has been quite a journey. We have done more than 30 episodes, and now it's time to do something exciting, something new. So we'll definitely come up with something new. Keep checking on our social media handles. It's riff_script. So do find us on various platforms. And thank you for watching us. Thank you for listening to us. Good night, goodbye, good morning, good afternoon, wherever you are listening to this. Thank you. Bye bye.